और अभी हम जा रहे हैं सी लाइफ ओशन वर्ल्ड बैंकॉक देखने, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग अट्रैक्शंस और अनमिसेबल, काफ़ी लोगों ने बोला था। और हम जा रहे हैं मेट्रो से। दिस इज़ द फ्लोएंचिट स्टेशन, मेट्रो का फ्लोएंचिट स्टेशन आपको दिख रहा होगा इन बैकग्राउंड, जो कि हमारे होटल के काफ़ी पास में है, जस्ट आई थिंक 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। और यहाँ से हम अभी जा रहे हैं टूवर्ड सियाम स्टेशन। एग्जिट ऑफ द स्टेशन मॉल में ही जाता है, जहाँ पे सी लाइफ ओशन वर्ल्ड लोकेटेड है। प्राइस है 75 बात। ये मेरे पास 100 बात का नोट है। और यहाँ किड्स का भी फुल टिकट लगता है, तो हमने 3 टिकट्स लिए हैं और ये रिटर्न 25 बात इन थाई करेंसी। तो यहाँ उन्होंने मैप्स भी देखे रखे हैं मेट्रो पर। यहाँ हम अभी फ्लोएंचिट पे है, हमें जाना है सियाम स्टेशन। तो भाई सियाम तो इस तरफ तो नहीं है, तो इट्स हियर, तो मतलब हमें दूसरी लाइन पकड़नी है। तो ये जो लाइन है जो पकड़नी है हमें, वो खोद करके लाइन है फ्लोएंचिट से सियाम। तो यहाँ आपको सियाम सियाम करके काफ़ी सारे नाम दिखेंगे। यहाँ पे सियाम फार्मेसी था, वो स्टेशन का नाम भी सियाम स्टेशन है। तो वाई सियाम? क्योंकि थाईलैंड का पुराना नाम जो था वो सियाम था। वो बहुत पुरानी चीज़ है, मतलब 1930s वगैरह के आसपास थाईलैंड को सियाम बोलते थे। लेटर ऑन इट गॉट चेंज टू थाईलैंड। उतरे हैं सियाम स्टेशन पर और उसको ये लोग सियाम नहीं बोलते, सयाम बोलते, सयाम। और मेट्रो से उतर के ही आपको सामने ही सयाम पैरागॉन मॉल दिखेगा, जहाँ सी लाइफ ओशन वर्ल्ड बैंकॉक लोकेटेड है। दिस इज क्वाइट अ बिग मॉल। एग्जिट नंबर 5 में उतर के हम मॉल में जाएंगे। और जैसे आप देख सकते हो, एग्जिट नंबर 5 के स्टेयर्स के बाहर आते ही देयर इज अ कनेक्टर व्हिच टेक्स अस डायरेक्टली इनसाइड द मॉल। हाँ, एसी। लग्जरी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, यू कैन सी देम। गुड लग्जरी ब्रांड्स इन दिस मॉल। Walking around like some cover the year. I bet there's the place like Tame with the ancient wisdom left by the mind. तो जैसे ही लिफ्ट से बाहर आते हैं B1 से, सी लाइफ में एंटर होते हैं हम। You the one airline Ryan. I got the traits of a lion. पीछे जो टिकट काउंटर दिख रहा है वहाँ पे काफी लंबी लाइन है, बिकॉज दीज गाइज हैव कम डायरेक्टली टू बुक द टिकट ऑन द स्पॉट। ऑन द कॉन्ट्री, मैंने क्लूक ऐप से बुकिंग की थी, जिसकी वजह से मुझे लाइन में रहने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे डायरेक्ट एंट्री मिली। ऑल्सो क्लूक पे आपको काफी अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं। तो यहाँ अगर आपने देखा मेरे स्क्रीन पर 3370, ये मेरा टोटल हुआ था, 2 adults and 1 child। और अगर चाइल्ड 1 year के ऊपर है तो उसका फुल टिकट ही लगता है। 2 adults and 1 child। Your ticket is one time entry, no limit time inside. Okay, 1, 2, enter, thank you. I got the traits of a lion. ये जो उनका एंट्रेंस एरिया है ना, वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे फिशेस हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में कुछ मतलब नहीं है। तो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो फिशेस की साइज़ भी बड़ी हो जाएगी। ये अभी थोड़े से बड़े फिशेस हैं, बड़ा टैंक है, काफ़ी बड़ा टैंक है। देयर आर 2 levels एंड देयर इज अ शार्क डाउन। ये ग्लास है, ग्लास फ्लोर है। ग्लास फ्लोर के ऊपर खड़े रह के शार्क देखो। आना इज गेटिंग स्कैर्ड ऑफ स्टैंडिंग ऑन द ग्लास बिकॉज द शार्क इज डाउन देयर। उभा रहा बेटा, तिकडे कम ये माझ्या बरोबर इकडे 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 हे बघ हे बघ, ये लवकर लवकर आहे क्विकली। आना इज टोटली स्कैर्ड। वो ग्लास के ऊपर कदम भी नहीं रख रही है। आ गई। अभी देखते हैं आगे शार्क। वो देखो शार्क है वहाँ पे। शार्क है, देखो नीचे आया शार्क। ये देखो शार्क है नीचे। ये देखो सी तेरा बेबी शार्क है। Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account, he investing. Dark shades on when I'm off the Migos. He's tryna cuff me like a nigga in a Rico. Moving through this shit like GTA with a cheat code. He claimed that he. Mama, 看他手上的。你看他好他最喜欢你粉红色这个，或者拿起来嘛，拿起来，要不然他看不到了。走，回来了。I just wanna dance all night. हमारी छोटी मछली पानी के अंदर। Starfish, I think. You see, it is stuck on the glass. That looks so disgusting, actually.
cheat code. He claimed that he love me, but be fucking all the freak hoes. I just wanna dance all night. Can't nobody do it just like I. Boy, you got just what I like. Come on, baby, let's kiss, don't fight. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. Just say the word, baby, I'ma get you right. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. Ain't gotta say it, I know I'm the one you like. Ooh, damn, tell the DJ turn the beat up. Got a white boy who be singing like a Beatle. Claim she getting bread, but I heard she doing keto. I don't do drugs, I'ma smoke a little weedo. I can't chase a man for no paper. Bitches think it's sweet, I'ma show him now or later. I be getting money on the wake up. He a broke boy, tell that nigga get his cake up. Only fuck with dope boys, they the ones who spinning paper, get your weight up. Told him send an Addy and to stay up. Bitches out here mad, told him assalamu alaikum. Who that bitch 5'5", she don't even need no makeup. क्या है ना stingray teeth, okay? Oh wow. These are shark teeth. Now this is the shark teeth, right? This is the Yeah, the shark teeth. shark. Touch it. Wow. Lobster in the hand. It's nothing. It's Yeah, you can. This is the you can touch it. Is it dead? It's in the shell. It's in the shell. Yeah, it's in the shell. Their body is in the first tank. Okay. Wow. This is the shark. Touch it. Touch it? टाइम के बारे में ये लोग बहुत पर्टिकुलर है. 3:30 स्टार्ट होने वाला था पेंगुइन फीडिंग शो. इट इज एक्जैक्टली 3:30 नाउ. पेंगुइन के लिए कुछ खाना लाया है. बता. Fish, but in the nature they love to hunt some food in the ocean เองได้ค่ะโดยอาหารที่พวกเขาโปรดปรานมากๆเลยก็จะเป็นปลาซาดีนนะคะแล้วก็ปลาแองโชวีตาม और ये उनका DIY सेक्शन है विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द पेंगुइन फीडिंग सेक्शन. और यहाँ बच्चों को टी शर्ट्स के ऊपर और बैग्स के ऊपर पेंटिंग करने का मौका दिया जाता है. एंड दे ऑल्सो सेल दोस टी शर्ट्स एंड बैग्स एट अराउंड 590 baht. So it's a good engaging activity for the kids and the parents. Stay up. का फूड एरिया भी है किड्स के लिए. कुछ प्रिंगल्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, पॉपकॉर्न एंड स्टफ लाइक दैट. चीज़ें तो वैसे ओवर प्राइस होती है ऐसे एंटरटेनमेंट पार्क्स में. अभी आधी लीटर की बोतल मुझे 30 baht में मिली. So this is one like resting place if you get tired, na? Like there's a lot of walking along the way. So
You can grab, anything, nah? You can grab anything. Like these all things, Sounds yummy to eat. So let's check out if we're gonna eat something or no, because I'm actually first. Chupa Chups ka drink. Oh, bro! Hey? There's a drink of Chupa Chups. Bro, oh no, it's called Chupa Chups. And guys, look at these. Look at that mermaid one. But soon we're gonna see a mermaid, bro. Who is that? Dinosaur eggs. They're so big in size. See this? Kinder Joy? And see this Care Bear, na? Jug Jug. That's one of the Care Bears. Jug Jug. Maybe there's one Jug Jug. See? Yeah. Here's Crispy noodle snack, pancakes. See that is Gold Bears, Star Bomb, M&M's, white chocolate. Take off for the wait. This is the footage of a lifetime. She's talking. ไม่อยากดูแล้วอยากทำอะไร और जो ऊपर हमने स्टिंगर देखा था अभी हमारे पास आके बैठ गया है Here. और हाना ने उसका नाम रखा है बारबरा. It's a girl. It's a girl, okay. And it loves me and Mona. All right. And also Bob. Bob loves me. There's another stingray called Bob. He was smiling at me. Really. I'll show you my dad's phone. It was really And Anna Barbara smiled at me. Anna Barbara smiled at me. Okay. Barbara smiled at me again. That's Megalodon. Megalodon. That's Megalodon. Anna, go stand there quickly. It's Megalodon. That's Megalodon. That's Megalodon. Yes. Oh, leopard. Look behind. So now our journey is complete. We are out at 4:40 p.m. We had entered at 2:30 p.m. and this is the souvenir shop. If people want to buy something, they can get something from here as a memory. It takes around 2 to 2.5 hours for this entire experience. And the star of the show was Stingray, not the shark, but the Stingray. So Stingray is the main attraction. You'll be wowed. और उनका एक smiling face होता है underneath their body. It's just a normal face, but हमें वो smiling लगता है. It is fascinating.
I could not stop clicking pics and videos, and even Ahana could not stop clicking videos with them. So this is the guy that you have to look out for. Stingray. Online Madame Tussauds का नहीं book किया था as a combo because I was not much interested in the wax museum यहाँ का. I wanted to see the Madame Tussauds of London. वहाँ पे I think 150 के ऊपर statues है, wax statues, and यहाँ पे सिर्फ 70 और wax statues है. So I was not so keen on going here. But sea life is something that you must visit, must experience. दो और important points है इसमें. Mermaid के आपने videos देखे होंगे ऑनलाइन, शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह आपने देखे होंगे जिसमें मरमेड भी है, विच इज़ अ ह्यूमन ड्रेस्ड एज अ मरमेड, पर वो एक्टिविटी इसमें नहीं है. दूसरी बात यह है कि जो फीडिंग सेशंस होते हैं, ऑटर फीडिंग होता है या फिर पेंगुइन फीडिंग सेशंस होता है, वो हमें फीड करने नहीं देते हैं, उनके ही आदमी फीड करते हैं एंड वी हैव टू जस्ट वॉच. ओके, तो आप वो एक्सपेक्टेशन से मत आओ कि मुझे फ़िश को फीड करने मिलेगा, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली 5 on 5. इट इज़ अ मस्ट डू एक्टिविटी इफ यू आर इन बैंकॉक एंड इफ यू आर विद अ किड. किड्स आर गोना लव इट, इवन द पेरेंट्स आर गोना लव इट. तो कॉस्टिंग बताया है, यहाँ पे कैसे आना है वो बताया है, टोटल एक्सपीरियंस के लिए टाइम कितना लगता है अंदर वो बताया है, कि जो भी फीचर्स हैं एवरीथिंग आई हैव शोन इन दिस ब्लॉग. और अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए.